Hello friends, a very good evening to all of you and welcome back once again in on your favorite YouTube channel for the preparation of IPMAT and JIPMAT examination for the year 2026. Now this is the IPMAT foundation batch that we have been running since like it's been 4 or 5 weeks, more than a month, right? And in these sessions we are covering up the very basics, the fundamentals of different areas. Right? So friends, a very good evening. Can you all please quickly confirm if I'm clearly visible and audible? Hello Mangal, how are you? Good evening, a very good evening. Yes, I can see your message. All right people. So can you please confirm if I'm clearly visible and audible? जल्दी से yes लिख दो अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है. Hi everyone, good evening. Kavya, good evening, good evening. All right, great. So got a confirmation that I'm clearly visible and audible. So my dear friends, in the last session, we have covered the basics, the fundamentals of series. Now the next topic in line is coding and decoding. Okay, so today we are going to look at the very basics of coding and decoding. And फिर coding decoding पे base कुछ questions हम solve करने वाले हैं. Right, so the agenda must be very clear, right? So let's begin our preparation. Let's begin this lecture of coding and decoding. But before I move into the basics, एक छोटा सा surprise है, एक छोटी सी information है आप लोगों के लिए. Now on the occasion of Guru Purnima, which is about to come, right? So we have certain offers for you. Okay, so ये जो गुरु पूर्णिमा का फेस्टिवल है, in the occasion of Guru Purnima, we have slashed the prices of some of the most favorite batches for the students. So IPMAT Pro 2026 जो batch है जिसका original price 13,999 है, this will now be available at price of 5,999. Now our latest upcoming batch IPMAT Master Quest 2.0 for 2026, original price जिसका 7,999 है. Now this batch will be available at an offer price of 2,999. So quickly friends, if you want to enroll in any of these programs, go ahead and do that, because these offers are valid only up till 13th of July 2025. Okay, so quickly hurry up. In case you are not an enrolled student in any of the batches, go ahead and quickly do this enrollment, right? Okay, so friends, let's begin with the basics of coding and decoding. Coding, decoding, if you remember from the lecture of series, हमने कुछ series में concepts किए थे, and I have told you to remember a few things in the lecture of series. तो ये क्या क्या चीजें थी? Now in series, certain kind of numbers are very important for us. Numbers as in even, odd numbers, prime numbers, perfect squares and perfect cubes. Okay, ठीक है, तो जल्दी से यार yes लिख दो. How many of you remember perfect squares and perfect cubes? तो मैंने आपको perfect square कहाँ तक बोला था? So perfect squares की बात करता हूं अगर मैं, so I have told you to remember the perfect squares up till 25. ठीक है, and अगर मैं cubes की बात करता हूं, perfect cubes up till 15. So this is what I have told you to do in the lecture of series. So how many of you remembers the squares up till 25 and the cubes up till 15? जल्दी से मुझे yes लिख दो. Come on, yes या no? Do you remember these squares? Yes or no? Do you remember these cubes? Yes or no? ठीक है, Mangal says yes. All right, that's it. Only one response. Now people have now started writing yes. All right, ठीक है. So some of you have mentioned yes, but ठीक है, काफी सारे students जिनको नहीं आता, तो please go ahead and start learning these numbers. ठीक है, fine. चलो, so perfect squares and perfect cubes ये मैंने याद करने के लिए बोला था. And then in the lecture of series, we have seen the number equivalents of the alphabets. तो जहां पे alphabetical series आ जाती हैं,
तो वहां पे आपको जितने भी अल्फाबेट्स हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग नंबर इक्विवेलेंट याद होने चाहिए। नंबर इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? A corresponds to 1, B corresponds to 2, C corresponds to 3, and so on up till like this. Z corresponds to 26. Okay, I hope you remember these things as well, right? So ये चीजें याद करनी पड़ेंगी। अगर याद अभी नहीं है तो प्रैक्टिस करना शुरू कर दो एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली इनको रिमेंबर कर लो। नाउ व्हाट हैपेंस आफ्टर 26? अब अल्फाबेट्स तो ए से स्टार्ट होते हैं और जेड पे एंड हो जाते हैं, बट नंबर्स 1 से स्टार्ट होके 26 पे एंड नहीं करते, राइट? सो इसके बाद 27 आएगा, 28 आएगा। हाँ, सो हमने ये सीरीज के टॉपिक में देखा था, इफ आई कीप कंटिन्यूइंग विद द नंबर्स, राइट? सो दीज अल्फाबेट्स विल स्टार्ट रिपीटिंग देम इन द सेम ऑर्डर। मतलब क्या है इसका? 26 पे जेड आके खत्म हो गया, राइट? अब मैं वापस ए से स्टार्ट कर दूंगा एंड आई कैन से दैट द नंबर इक्विवेलेंट ऑफ ए का नंबर इक्विवेलेंट 1 तो हो ही सकता है, देन 27 भी हो सकता है। दिस इज अनदर पॉसिबिलिटी। सिमिलरली बी कैन बी 28, सी कैन बी 29 एंड सो ऑन, एंड जेड कैन ऑल्सो बी 52। ठीक है, तो अगर आप केयरफुल ऑब्जर्वेशन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लाइक ए का नंबर अगर 1 है तो 1 में 26 ऐड कर दो, 1 में 26 ऐड करके क्या आ जाएगा? 27 आ जाएगा। सो द नंबर इक्विवेलेंट ऑफ ए कैन बी 1 और 1 प्लस 26 विच इज 27। 27 में भी दोबारा से 26 ऐड कर दो, प्लस 26 करेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा? 53। सो द नंबर इक्विवेलेंट ऑफ ए कैन बी 1, 1 प्लस 26 27, फिर दोबारा से 26 ऐड कर लो 53, दोबारा से 26 ऐड कर लो 79 एंड सो ऑन लाइक दिस इट विल कीप ऑन गोइंग अप टिल इंफिनिटी। ठीक है, सिमिलरली फॉर बी का नंबर इक्विवेलेंट 2 है, उसमें 26 ऐड करके 28 बना सकते हैं, दोबारा 26 ऐड करते रहो एंड यू कैन गेट द नंबर इक्विवेलेंट्स ऑफ दीज अल्फाबेट्स लाइक दिस। ओके, राइट? Sir, when classes will start? Okay, so Nimish, which classes, which batch are you talking about? ठीक है, अगर आप नए बैच की बात करें मास्टर क्वेस्ट, आई थिंक 23rd of July से वो वाला बैच स्टार्ट हो रहा है। ओके, राइट? मंगल, तुम पूछ रहे हो यार कि कैन आई गेट इनटू IIM इंदौर विद द प्रेप फ्रॉम यूट्यूब? मंगल, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि जो कहीं से भी प्रिपरेशन नहीं करते, कोई फॉर्मली कोई बैच ज्वाइन नहीं करते, उनका IIM इंदौर में हो जाता है, बट ऐसे बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है, सो मंगल, इट डिपेंड्स ऑन योर लेवल। ठीक है ना, हर एक स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। तो अगर मैं एक इस टाइप का स्टूडेंट हूं जिसको क्वांट, मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड वर्बल, मैं स्ट्रांग हूं इन तीनों एरियाज में, बहुत ज्यादा स्ट्रांग, तो मुझे सिर्फ थोड़ी बहुत रिवीजन की जरूरत पड़ेगी, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, मॉक टेस्ट सीरीज की जरूरत पड़ेगी, एंड आई विल बी एबल टू मेक लाइक आई विल बी एबल टू गेट एडमिशन इन द टॉप कॉलेजेस। बट अगर मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूं जिसका मैथ्स इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, लॉजिकल रीजनिंग स्ट्रांग नहीं है, वर्बल एबिलिटी स्ट्रांग नहीं है, तो मुझे एक्स्ट्रा प्रिपरेशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो बच्चे आपको डिसाइड करना है कि आपका लेवल कैसा है when it comes to maths, when it comes to quant, logical reasoning and verbal ability. ठीक है, so you can decide it by yourself. चलिए, so हमें ये चीजें हमें पता है सीरीज के चैप्टर के बेसिस पे। ठीक है, अब अगर हम कोडिंग डिकोडिंग में आते हैं तो कोडिंग डिकोडिंग में हमें करना क्या होता है? लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया ये सारी चीजें तो पता होनी चाहिए, राइट? नाउ कोडिंग डिकोडिंग प्राइमरीली मैं दो टाइप की कोडिंग डिकोडिंग, दो टाइप्स में डिवाइड करता हूं, राइट? नाउ फर्स्ट टाइप ऑफ कोडिंग डिकोडिंग, टाइप 1, where any word will be jumbled to obtain the code. तो किसी भी एक वर्ड का हमें कोड ऑब्टेन करना है तो उस वर्ड में जो भी अल्फाबेट्स प्रेजेंट हैं हम उनको किसी ना किसी जम्बल्ड ऑर्डर में लिख देंगे, राइट? तो जो भी वर्ड है उसको मैं जम्बल्ड ऑर्डर में लिख दूंगा एंड उसका कोड हम पता कर लेंगे। ठीक है, अब ये जम्बल्ड ऑर्डर क्या है, जम्बल्ड सीक्वेंस क्या है,
हमें ये डिटरमाइन करना है एंड दैट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस। ओके, अब ये जंबल सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, सो आई विल गिव यू डिफरेंट एग्जांपल्स। फाइन, सो लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं। सो लेट्स से अ वर्ड जिपमैट, एक ये वर्ड है जिपमैट, इज कोडेड एज TAMPIT, ओके, सॉरी PIJ. Fine. So GIPMAT is coded as TAMPIJ. Okay. Now what has happened here? You can observe that GIPMAT, ये जो word है, इसमें जो भी अल्फाबेट्स हैं, ये सारे के सारे अल्फाबेट्स इधर प्रेजेंट हैं, सारे के सारे प्रेजेंट हैं, बट ये किसी ना किसी जंबल्ड सीक्वेंस में है। तो हमें वो जंबल्ड सीक्वेंस डिटरमाइन करना है एंड वो वाला जंबल्ड सीक्वेंस का जो भी लॉजिक यूज हुआ है, उस लॉजिक को यूज करके हमें एक और वर्ड गिवन होगा, उसका कोड डिटरमाइन करना है, राइट। सो एक एग्जांपल आपको गिवन होगा, सो दे विल से दैट इफ GIPMAT JIPMAT is coded as TAMPIJ, then what will be the code for market, MARKET, राइट। सो जो भी लॉजिक आप यहां पे देख सकते हो, वो लॉजिक, सेम लॉजिक यहां पे अप्लाई करना है एंड यू विल हैव टू फाइंड आउट, डिटरमाइन द कोड फॉर मार्केट। सो कैन यू टेल मी व्हाट हैज हैपेंड हियर? ओके, come on, tell me, anyone, what has happened here? क्या हुआ है? What is the logic behind this? And what will be the correct answer for this question that I've asked you? All right, one student says mirror image. You could have used a better word. ठीक है, आपको अगर लग रहा है mirror image, fine, you are close to the correct logic. But determine what has happened here. तो जिपमैट JIPMAT, ये सारे के सारे अल्फाबेट्स यहाँ पे भी प्रेजेंट हैं, ये तो हम समझ गए, राइट। अब वो जंबल सीक्वेंस क्या है? तो जिपमैट को क्या किया, मिरर इमेज नहीं बोलेंगे इसे, इसको क्या बोलेंगे, हमने पूरे के पूरे वर्ड को रिवर्स कर दिया, राइट। हमने क्या किया, पूरे के पूरे वर्ड को रिवर्स कर दिया। दैट मीन्स द फर्स्ट अल्फाबेट बिकम्स द लास्ट अल्फाबेट, सेकेंड अल्फाबेट बिकम्स सेकेंड लास्ट अल्फाबेट, थर्ड बिकम्स थर्ड लास्ट, फोर्थ बिकम्स फोर्थ लास्ट। तो ये जो भी वर्ड था, ओरिजिनल वर्ड, इसको मैंने क्या किया, रिवर्स कर दिया। ओके, ठीक है, फाइन। सो सेम लॉजिक विल बी अप्लाइंग हियर फॉर मार्केट। तो मार्केट में जितने भी अल्फाबेट्स हैं, जितने भी वर्ड्स, जितने भी अल्फाबेट्स यूज हुए हैं, इन सबको रिवर्स कर देंगे। एज इन M विल गो टुवर्ड्स द एंड, A विच इज द सेकेंड अल्फाबेट विल बिकम द सेकेंड लास्ट, एंड ये जो लास्ट है ये फर्स्ट बन जाएगा, मतलब पूरा का पूरा वर्ड रिवर्स हो जाएगा। सो इट विल बिकम TEKRAM। ऑलराइट, ठीक है। सो दिस वाज अ वेरी बेसिक एग्जांपल, बहुत सिंपल एग्जांपल था। अब यहां पे जंबल सीक्वेंस किस किस टाइप की हो सकती है, राइट। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि जंबल सीक्वेंस क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ओके, so one way they may also say is, let's say मैं एक example और लिखता हूं, that GIPMAT is coded as PIJTAM. Okay, so can you all determine what has happened here? Just tell me the logic behind this. Come on, मेरे को लॉजिक बता दो, लॉजिक क्या यूज हुआ है यहां पे। All right, nice Drishti, very good. Anyone else? All right, great. So what has happened here is first three alphabets JIP, ये तीनों रिवर्स हो गए, PIJ बन गया, एंड देन द लास्ट थ्री अल्फाबेट्स अगेन ये तीनों रिवर्स हो गए। ओके, ठीक है। सो दिस इज द लॉजिक। अब सेम लॉजिक के साथ हम क्या करेंगे, जो भी वर्ड गिवन होगा उस पर अप्लाई करेंगे ये वाला लॉजिक एंड विल बी एबल टू डिटरमाइन द कोड। डन। अगेन आई गिव यू वन मोर। लेट्स से क्वेश्चन सेज जिपमैट is coded as
𝐴𝐼𝐗𝐬MPT. 𝐴𝐼𝐗𝐬MPT. GIPMAT is coded as 𝐴IJMPT. Now tell me what has happened here. Now obviously you will have to determine the logic. Same logic आप आंसर डिटरमाइन करने के लिए फाइंड आउट यूज कर सकते हो. ओके, सो एनीवन क्या हुआ है यहाँ पे? So JIPMAT, the word is same. Now this is a different code. So what has happened here? Okay, no answer. Nobody is able to determine the logic behind this. Okay, now what has happened here is जितने भी alphabets यहाँ पे GIPMAT में use हुए हैं, all these alphabets are arranged in alphabetical order. Okay, I'll repeat. जो भी alphabets यहाँ पे आए हैं, इन सबको alphabetical order में arrange कर दिया गया है, right? So that means A is the first alphabet. A के बाद I आता है, फिर J, then M, then P, and then T. So all these alphabets are arranged in alphabetical order. That's it. This is the logic that is used here. Fine. So this is type 1 of coding in which जितने भी alphabets हैं वो सारे के सारे present हैं, but they are present in some jumbled sequence. Done? This is type 1. Now let's move on and look at type 2 coding. Now type 2 coding थोड़ा सा associated है जो हमने series में किया था. Okay? So taking an example for this. So once again, I'll take the same word. GIPMAT is coded as okay. So GIPMAT is coded as 𝐾𝐗𝐄NBU. This is the code for GIPMAT, right? Now, once we are able to determine the logic behind this, क्या concept use हुआ है, then answer तो आ ही जाएगा. ठीक है? So tell me what is the logic behind this kind of coding, all of you. Absolutely, Mangal, very good. I have given you another example. Some of you have a look at it as well. So मैंने दो example लिखे हैं, दो possibilities लिखी हैं. Determine the logic for both these cases. Okay, so first का तो काफी लोगों ने सही आंसर दे दिया, प्रहलाद and Ikshwaku and Mangal. Nice, 3 of you have given the perfect logic. Second का भी logic identify कर लो. Now this is Q. मैं इसको दोबारा से लिख देता हूं. Absolutely correct. Nice. ये कौन है? रिश्विता. रिश्विता absolutely correct. दृष्टि good. Okay, चलो. So let's identify the logic in both these cases. Now, in this type of coding, you can see that जो भी alphabets यहाँ पे present हैं, not all of them are present in the code. Okay? So that means हर एक alphabet के corresponding कोई ना कोई नया alphabet आया है. Okay? That means this kind of logic is somewhere related to the number equivalents, the positioning of these alphabets. Fine? Now, in these cases, it is very easy to determine. So J
+1 is k, so +1 has happened. ओके तो मैंने क्या किया, j जो भी पोजीशन पे था उसकी नेक्स्ट पोजीशन पे कौन सा अल्फाबेट है, मैंने नेक्स्ट अल्फाबेट लिख दिया. सो j +1 is k, then I +1 is j, p +1 is q. So everywhere +1 has happened, or you can say that the next alphabet is written corresponding to any of these alphabets. ठीक है, लॉजिक डिटरमाइन हो गया. अब अप्लाई कर सकते हैं. What has happened in the second case? For the first alphabet, it is +1. For the second alphabet, it is -1. So first alphabet का हमने क्या किया, next alphabet लिख दिया. Second alphabet का हमने previous alphabet लिख दिया. Third alphabet next. Fourth alphabet previous. Fifth alphabet next. Sixth alphabet previous. So basically +1 -1 +1 -1 has happened in this case, right? +1 -1 +1 -1 has happened in this case. Correct? ठीक है. एक और एग्जाम्पल लिखता हूं मैं. So example number 3. Let's see if you are able to determine the logic. Okay, so this is the code. Now tell me what has happened in this case. Yes, Mangal, it was same as the previous case. The only difference is +1 -1 +1 -1. You are able to determine this one. Now go for this. Absolutely great, nice. Now what I would say is you will be able to easily or quickly determine the logic. अब देखो हर बार इतना इजी तो लॉजिक नहीं हो सकता. ओके राइट. सो नाउ इन दिस केस व्हाट इज बीइंग फॉलोड. तो j का अगर मैं नंबर इक्विवेलेंट लिख देता हूं, अगर मैं इन सारे अल्फाबेट्स को नंबर इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर देता हूं, देन इट विल बी इजी टू ऑब्जर्व द कंसेप्ट, द लॉजिक दैट इज यूज्ड हियर. ठीक है. तो नंबर इक्विवेलेंट अगर आप नंबर्स में कन्वर्ट कर दोगे ना, तो नंबर्स में ऑब्जर्वेशन आसान हो जाता है एज कंपेयर टू द अल्फाबेट्स. So अगर मैं नंबर्स में कन्वर्ट करता हूं, J is 10, I is 9, P is 16, M is 13, A is 1 and T is 20. Now correspondingly यहां पे 11, 11, 19, 17, 6 and 26. So let's observe. 10 has become 11, that means +1. 9 has become 11, that means +2. 16 has become 19, +3. 13 has become 17, +4. 1 has become 6, +5. And 20 has become 26, +6. ठीक है. तो अगर आपको नंबर इक्विवेलेंस याद है और आप इन सबको नंबर इक्विवेलेंस में कन्वर्ट कर देते हो, देन it gets easy to observe, it gets really quick to observe the pattern when you have numbers in front of you. ठीक है. तो अब यहाँ पे लॉजिक क्या यूज हुआ है, +1 +2 +3 +4 and so on, +5 +6. ठीक है, राइट. सो दिस इज इट. ये सेकेंड टाइप ऑफ सीरीज है. ओके. सो फर्स्ट टाइप में क्या था, जंबल सीक्वेंस. सेकेंड टाइप में प्राइमरीली ये जो अल्फाबेट्स हैं, ये these are somewhere associated with their number equivalence. नंबर इक्विवेलेंस पे कन्वर्ट करके हम क्या करेंगे, जो सीरीज में हमने देखा था पैटर्न, सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न्स आर यूज्ड इन दीज क्वेश्चंस. ओके. नाउ लेट्स क्विकली हैव अ लुक एट सम ऑफ द क्वेश्चंस. सो ऑल ऑफ यू, I have not given the options today in these questions. ठीक है. So I have made these questions myself. So go ahead and tell me what will be the complete answer for these questions. Go ahead. At least tell me the logic.
All right, so you got the logic. Nice. So logic, you are saying that plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2. तो चिल्ड्रन का इसका आंसर बता सकते हो? लॉजिक तो डिटरमाइन कर लिया, प्लस 2 होगा. सो यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट द आंसर. प्लस 2 कैसे होगा? लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग. सो इफ आई राइट द नंबर इक्विवेलेंस यहाँ पे टीचर में, सो टी ई ए सी एच ई आर. ओके, correspondingly V 22, G is 7, then it is 3, E is 5. So I can clearly see that plus 2 plus 2 plus 2 is happening. But एक बार लास्ट तक चले जाओ, J is 10, then it is 7, then it is 20. So everywhere plus 2 is happening. So what I have to do is I just have to add 2 everywhere for children. ठीक है ना? So C plus 2, it will become 3 plus 2 5. E H plus 2, H is 8 plus 2 10. J I is 9. K L M N D E F R S T E F G N O P. So this should be the complete answer of this question, right? So simply plus 2 plus 2 plus 2 is happening and we have got the answer for this one, right? So just determine the logic and get the answer. Next question, question number 2 on your screen. If ROAST, roast, is coded as PQYUR in a certain language, then how will sloppy, SLOPPY, be coded in that language? Absolutely. Great. So one of the students saying, Drishti says minus 2, minus 2, minus 2. Other student says plus 2, minus 2. So what is the logic here? Minus 2 or plus 2, minus 2? Now ROAST, if I'll write the number equivalence, so 18, 15, 1, 19 and 20. Okay. Now P is 16, so definitely it's minus 2 for the first case. Now Q, what is the number equivalent of Q? It is 17, right? So first case में minus 2 हुआ है, then plus 2 हुआ है. This is what I believe. So it's not minus 2, minus 2, minus 2. Also it's not plus 2, minus 2. So it starts with minus 2. ठीक है ना? So plus 2 से start नहीं हो रहा है, minus 2 से start हो रहा है. Now y is 25. Now 1 minus 2, 1 में से 2 माइनस करेंगे, a से उल्टा चलना शुरू करेंगे. a से पहले z आता है, z से पहले y आता है. तो एब्सोल्युटली करेक्ट, यहां पे क्या हुआ है? माइनस 2. सो माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2. ऑलराइट, यहां पे चेक करते हैं 21, सो इट इज प्लस 2 एंड फाइनली 18, इट इज माइनस 2. So definitely it has started from minus 2 and then plus 2, minus 2, plus 2, minus 2, alternately starting with minus 2. Done? So sloppy, SLOPPY. So 19, 12, 15, 16, 16, 25. These are the number equivalents. I'll start with minus 2, plus 2, minus 2, plus 2, minus 2, plus 2. So this will become 17, 14, 13, 18, 14 and 27. So 17 के equivalent, alphabet equivalent to 17 is Q, N, M, R, N and 27 is A. So this should be the complete answer of this question, right?
So some of you have written this answer. Please match it. अगर मैंने कुछ गलत किया है तो बताओ. Okay, so if I have written something wrong, QNMRNA. Absolutely. So this answer matches with the answer of some of the students. Perfect. Okay, great. Let's move on and look at the next question. Again, tell me the logic behind this. All right. +2 +3 +2 +3. Okay, let's check it out. So again, I'll write the number equivalence. BASIC and correspondingly 4, 4, 21, 12 and 5. So +2 +3 +2 +3 +2. Absolutely correct. So +2 +3 +2 3 and 2. Okay, so our question is leader, LEADER. So if I'll add +2, it will become 14, then +3 +2 +3 +2 and +3. So it will be NHCGGU. NHCGGU. That should be the answer. Okay, fine. So alternate addition of 2 and 3 has happened here, and that is the final answer. Okay, so Mangal has given, Prahlad has given the final answer. Wonderful, lovely, lovely people, great. ठीक है, अब क्या ये प्रैक्टिस करते रहोगे ना, तो the speed at which I'm writing these number equivalents, अल्फाबेट से नंबर, नंबर से अल्फाबेट, ठीक है, तो ये स्पीड होनी चाहिए आपकी. अदरवाइज हम हर बार स्टार्टिंग से कैलकुलेट करते रहेंगे. तो प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट, and practice will be able to help you increase your speed. Okay, now next question on your screen. Now this is slightly different question. Now A is equal to 26 and sun is equal to 27. Then what will be cat equivalent to? So A is coded as 26, sun is coded as 27. तो cat का code क्या होगा? Now catch the complete logic behind this, then only you will be able to catch this cat. All right, 28, 57, two different answers. 28 गायब हो गया है. So 57 is the only answer that I've got from one of the students, Mangal. All right, Mangal, अभी देखते हैं 57 correct है या फिर नहीं. But Mangal, can you write, like, if you can you write the logic that you have used?
Okay, all right, Mangal, you have already written that. Good, good, good. Perfect. चलिए, so discuss करें ये वाला question. Now A. Now since you can see that यहाँ पे number लिखे हुए हैं, the code are related to, the codes are associated to the numbers, right? ठीक है, but A का number equivalent होता है 1 and SUN इनके number equivalent होते हैं 19, 21 and 14. Okay, so if I talk about the direct number equivalents तो काम नहीं चलेगा, बात नहीं बनेगी. इनको add भी कर देंगे तो 27 से बहुत बड़ा number आएगा. Okay, so what is the logic used here? So one logic is called reverse alphabetical coding. अब reverse alphabetical coding होता क्या है ये समझते हैं थोड़ा सा. तो अगर मैं A का number equivalent देखता हूं from the beginning, so from the beginning the position of A is 1, position of B is 2, position of C is 3 and so on, position of Z is 26. But if I look at their positions from the end, right, positions from the beginning तो देख लिया ये होंगी. अब अगर मैं position from the end लिखता हूं तो Z will be the first alphabet from the end. ठीक है, Z से पहले क्या आता है Y which is 25th alphabet from the beginning will become second alphabet from the end. Similarly, X which is 24th alphabet from the beginning will become third alphabet from the end. ठीक है ना, एंड से चेक करेंगे, Z पहला हो जाएगा, Y दूसरा हो जाएगा, X तीसरा हो जाएगा. सिमिलरली C का नंबर क्या होगा फ्रॉम द एंड. सो C का नंबर एंड से क्या होगा, इट विल बी 24, दिस विल बी 25th एंड दिस विल बी 26th. ठीक है, राइट. तो इन रिवर्स अल्फाबेटिकल कोडिंग A का नंबर इक्विवेलेंट क्या होगा, इट विल बी 26 जो उसका कोड लिखा हुआ है. ठीक है, SUN इनका चेक करते हैं. अब यहां पे हाउ टू क्विकली डिटरमाइन द रिवर्स कोड फॉर एनी अल्फाबेट. तो पोजीशन फ्रॉम द बिगनिंग एंड पोजीशन फ्रॉम द एंड इनमें एक रिलेशन होता है. A का पोजीशन फ्रॉम बिगनिंग 1 है, पोजीशन फ्रॉम एंड 26 है. इनका सम, इन दोनों वैल्यूज का सम हमेशा 27 आएगा. 2 and 25 का सम 27, 3 and 24 का सम 27 एंड सो ऑन. आप किसी के लिए भी चेक कर लो, पोजीशन फ्रॉम द बिगनिंग एंड पोजीशन फ्रॉम द एंड इन दोनों का सम हमेशा 27 आएगा. ठीक है, तो S जिसका पोजीशन फ्रॉम द बिगनिंग 19 है तो इसका पोजीशन फ्रॉम द एंड कैसे निकालेंगे, 27 में से 19 सब्ट्रैक्ट कर दो. क्यों, क्योंकि 27 सम होता है, राइट. सो 27 में से 19 सब्ट्रैक्ट किया तो 8 आ जाएगा. ऐसे U के लिए 27 में से 21 सब्ट्रैक्ट किया 6 आ जाएगा एंड यहां पे 13 आ जाएगा. नाउ 8, 6 एंड 13 इन सबको ऐड करोगे तो 27 आ जाएगा. 27 विच इज द कोड फॉर सन. ठीक है, तो दैट मींस दो केसेस में यहां पे चेक हो गया है, कोड क्लियर है, लॉजिक क्लियर है. तो कैट के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं. सो कैट 3, 1 एंड 20 आर द पोजीशंस फ्रॉम द बिगनिंग. सो 3 अगर बिगनिंग से पोजीशन है, 27 माइनस 3 24 विल बी इट्स पोजीशन फ्रॉम द एंड. A के लिए 26 हो जाएगा एंड T के लिए 7 हो जाएगा. इन तीनों को ऐड करेंगे, आंसर आ जाएगा 57. एंड यस मंगल, यू हैव गिवन अ परफेक्ट आंसर. लवली. ठीक है, सो फ्रेंड्स दिस इज अनदर लॉजिक दैट कैन बी यूज्ड इन द एग्जामिनेशन, राइट. चलो आगे चलते हैं. एंड फाइन, दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास ऑफ कोडिंग एंड डिकोडिंग. ठीक है, सो आज हमने दो टाइप की कोडिंग डिकोडिंग की है. Okay, now in these two types of coding decoding, in the first one we have seen the jumble sequence, in the second one we have seen how number equivalent of the alphabets are associated with the alphabets. Okay, now other than this we have some other types of questions of coding decoding like group coding, एक बहुत important चीज है, then coded inequalities. So we'll be taking up these things in further classes to come. All right, so friends, that's all from my side.
And before I go, I also like once again remind you, on the occasion of Guru Purnima, we are having some offers for all of you. So IPMAT Pro 2026 batch, which was originally priced at 13,999, will be available at an offer price of 5,999. Also, the much awaited IPMAT Master Quest 2.0 2026 batch, original price at 7,999, now is available at an offer price of 2,999. और ये जो offers हैं ये सिर्फ 13th of July 2025 तक valid है, तो जल्दी से enroll करो यार if you are not a student at IPMAT वाला. All right, so friends, that is all from my side. Thank you very much. I'll see you on the next week, like in the next week. Okay, same time, same place with the next topic. Have a nice time. Good day. Bye-bye.